अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ अबाउट क्लास। व्हाट्स अ क्लास? फर्स्ट you must be able to understand the difference between class, phrase and a sentence. So the definition of a sentence is simply that it's a and subject and predicate or subject verb combination. Class is similarly a subject and verb combination. So phrase is a verb and preposition, or sometimes a verb or an adverb or something else. So there's a close relation between a sentence and a class. Though class is a part of a sentence, it may sometimes be a part of a bigger sentence. But on the basis of structure, we say that sentence and clause are almost same. They are both based on subject-verb combination, and sometimes there can be a clause that has a complete sense, like a sentence. But today I am going to have a discussion about class. What is a class? And this has been in discussion from the last few days, because I'm actually preparing to teach you transformation of sentences, simple, compound and complex sentence, and how to convert simple sentence into compound and compound into complex and complex into compound, complex into simple. So all that. So my previous lecture that was about finite and non-finite verbs, that was a preparatory lecture for that, and today's this lecture, that's I'm introducing class. So it's same as that, a preparation for the my actual lesson, that is conversion of sentences, transformation of sentences. So class is divided into two class. There are two types of classes. One is independent or main class, and the next is dependent, or we call it subordinate class. So there's a similarity that both these classes, whether independent class or dependent class, they have subject verb combination. This is their similarity, that both have subject and verb. But as far this independent clause is concerned, it gives a complete sense. It can stand independent. It can stand independent. If the rest part of the statement is removed or cut from it, it can stand independent. It needs no one's help. But as for the dependent clause is concerned, though it has subject and verb in it, but it has incomplete sense. It gives incomplete sense. It cannot stand without independent clause. So it is dependent on main clause. So this is the main difference. So as for this dependent or subordinate clause is concerned, it has been divided into three types of clauses. There are three types of subordinate clauses. One, adverb clause. Second, adjective clause. And third, noun clause. So a subordinate clause can replace either an adverb or an adjective or a noun. So based on that, we call that part of the sentence, that clause, either adverb clause or adjective clause or noun clause. So it depends what type of work it does in a sentence. So our next thing is independent and dependent clause. So these are sentences, and if you read them out, you can understand which part of the sentence or which clause is independent and which is dependent. First of all, read this. They rested when evening came. In this you see the highlighted part, this is independent. So they rested, it can stand independently. They is the subject and rested is the verb. They rested. It gives a complete sense. But as far this part is concerned, when evening came, jab sham aayi, it does not give a complete sense. Though there is subject, evening is subject, came is verb, subject and verb is there.
So it's a complete class, but it does not give complete sense. So we say it is not an independent class. It cannot be the main class because it does not give complete sense. If you read the second sentence, you may sit wherever you like. You may sit. It gives complete sentence. You may sit. आप बैठ सकते हैं. You subject, sit verb. It has subject and verb and it gives complete sense, so it is independent class. And the next class is wherever you like. जहाँ आप चाहेंगे. अगर हम इतना ही बताएंगे जहाँ आप चाहेंगे, आप बैठ सकते हैं जहाँ आप चाहेंगे. जहाँ आप चाहेंगे it's incomplete. It does not give complete sense unless and until it's not connected with the independent class. It gives no sense. However, this you is the subject, like is the verb. इसमें भी subject भी है, verb भी है, जैसे हमने independent class में देखा. इसमें भी subject है, verb भी है, but it gives not a complete sense. That's why we call it it's a dependent class. So इसी को आप अगर आप दूसरे में देखेंगे जहाँ मैंने dependent class को highlight किया है, यही sentence सेम ही है. They rested when evening came. It is dependent class, as I explained above. It's dependent class because it does not give complete sense when जब शाम आई. So it's connected with the independent class. Similarly, wherever you like, you may sit wherever you like. It's dependent class because it cannot stay independent. So this is that what I said, that classes have two main types on the basis of structure. One independent class, the next dependent class. Independent class has subject and verb in it and it gives complete sense. Dependent class also has subject and verb, but it does not give complete sense. Okay. Now, I said earlier that dependent clauses can be categorized into three types based on what work does that clause do in the sentence. Does it do the work of an adverb or an adjective or a noun? So on that basis we can categorize or we can differentiate them what type of clause it is. See the first sentence. They rested when evening came. They rested. So when evening came. This when evening came is a dependent clause, but it works in place of an adverb. For example, they rested. When, कब. तो अगर आपको एडवर्ब आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने एडवर्ब पढ़ा होगा. व्हाट्स एन एडवर्ब? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब. तो आप यहाँ देखते हैं दे रेस्टेड. कब? तो रेस्ट हैज़ बीन qualified by when evening came. So since this is not a single word adverb but it's a complete class, we call it works in place of an adverb. ये adverb का ही काम करता है लेकिन एक पूरा class है, इसलिए हम इसको adverb नहीं बल्कि adverb class कहते हैं. इसी तरह से दूसरा, the umbrella which has a broken handle is mine. अगर हम इतना ही पढ़ेंगे the umbrella is mine, it's a complete sentence, it's an independent class. लेकिन जो बीच में मैंने डाला है which has a broken handle, ये किसकी बात हो रही है? Umbrella की. So it qualifies umbrella, it qualifies a noun. So any word that qualifies a noun is called adjective. लेकिन यहाँ पे एक word qualify नहीं करता. अगर एक word qualify करेगा, जैसे मैं कहूँगा the broken umbrella is mine, तो broken जो है that becomes an adjective. लेकिन अगर पूरा क्लास किसी नाउन को क्वालिफाई करे which has a broken handle, तो इसको हम adjective नहीं बल्कि adjective class कहते हैं. तो यानी पहले में मैंने बताया कि ये जो क्लास है इट वर्क्स इन प्लेस ऑफ एन एडवर्ब. ये एडवर्ब का काम करता है लेकिन चूंकि पूरा क्लास है इसलिए इसको एडवर्ब क्लास कहते हैं. और दूसरा जो मैंने बताया विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, इट वर्क्स इन प्लेस ऑफ एन एडजेक्टिव, लेकिन चूंकि क्लास है इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं. सिमिलरली आई एक्सपेक्ट, एक क्लास है, दैट आई शैल गेट ए प्राइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इनाम मिल जाएगा. आई एक्सपेक्ट व्हाट. सो एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है, the object of the I expect what? That I shall get a prize. I expect nothing. I expect something. We can replace the object with any other word. We can replace it with a word or a class. So इस वक्त ये एक object जो है पूरे class से replace हुआ है in place of an object. So we call it a noun class because it answers what. So adverb जो हमने पहला देखा, it answers where. Adjective answers what type or which one, and noun a noun class answers what. तो
इस तरह से जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे अंदाज़ा है कि शायद आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्लास के जो मेन दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास के जो तीन कैटेगरीज हैं, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास, तो किस तरह हम इनको समझ सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। आप ये देखिए कि इन सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास कौन है, डिपेंडेंट क्लास कौन है। तो वैसे मैंने कलर जो है डिफरेंट, हर एक क्लास का अलग अलग कलर लिखा है और कुछ ब्रैकेट्स में क्लू भी रखा है ताकि आपको आसानी हो जाए। एक आपको ये बताना है इंडिपेंडेंट क्लास कौन है, डिपेंडेंट क्लास है। आपके इशारे के लिए एक कलर में जो एक क्लास है, ग्रीन कलर में एक क्लास है, और जो है ब्लैक कलर में दूसरा क्लास है। और दूसरी चीज़ आपको बतानी है, ट्रेस वेदर द इंडिपेंडेंट क्लास वर्क्स एज ए नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब आपको बताना है जो इन दो पार्ट्स में से, दो क्लासेस में से जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा, डिपेंडेंट क्लास मुझे लिखना चाहिए था, डिपेंडेंट क्लास, सॉरी। तो डिपेंडेंट क्लास जो इनमें से है, तो आपको बताना होगा कि ये डिपेंडेंट क्लास जो है ये नाउन के बदले काम करता है। आपको कब पता चलेगा नाउन, व्हेन इट आंसर्स व्हाट। आपको कब पता चलेगा एडवर्ब, व्हेन इट आंसर्स हाउ, वेयर। आपको कब पता चलेगा ये एडजेक्टिव है, व्हाट टाइप, विच वन। तो आप पहले सेंटेंस में देखिए, इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल। तो इसमें दो क्लासेस हैं, एक ग्रीन से है, एक ब्लैक से है। इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल। तो आप देखिए यू विल बी इल, यू विल बी इल, यू बी, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, पूरा क्लास है, यू विल बी इल, और कंप्लीट माने हैं इसके, यू विल बी इल, आप बीमार पड़ेंगे। लेकिन जो ये दूसरा पार्ट है, इफ़ यू ईट टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, इफ़ यू ईट टू, इट गिव्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, इट्स कनेक्टेड विद द इंडिपेंडेंट क्लास। अगर आप इतना ही लिखेंगे इफ़ यू ईट टू मच, दूसरा आपका इंतजार करेगा अभी कुछ और बोलने वाला है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आप कहेंगे तो फिर क्या होगा, सो यू विल बी इल, कैसे बीमार पड़ेंगे इफ़ यू ईट टू मच। सो इफ़ यू ईट टू मच जो है, इट रिप्लेसेस एडवर्ब, इट रिप्लेसेस एडवर्ब, इट क्वालिफाइज दिस वर्ड बी। तो ये आपके किस क्वेश्चन का आंसर है, हाउ यू विल बी इल, हाउ विल यू फॉल इल, हाउ विल यू फॉल इल, कैसे बीमार पड़ेंगे, आंसर्स हाउ। इसी तरह से आई शैल रिमेन वेयर आई एम, तो आई शैल रिमेन, इट्स गिव्स कंप्लीट सेंस वेयर आई एम, it answers where, so it's an, so first two are adverb clauses because they replace an adverb. So तीसरे सेंटेंस में आप देखिए, I remember the house where I was born, which one, किस मकान की बात हो रही है। I remember the house, ये complete sentence है, I remember the house, it's an independent clause, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, where I was born, जहाँ मैं पैदा हुआ था। So ये this qualifies the house, where I was born qualifies the house. So house is a noun, so it's an, where I was born is an adjective. It's an adjective clause. So since it's not a single word, it's a complete clause, we call it adjective clause. The dog that bites doesn't bark. कौन सा dog? Which one? What type? It replaces adjective. Fifth sentence, I earn whatever I can. I earn what? Object of this earn. Whatever I can. What? No one knows. What? नो वन, क्या नोज का ऑब्जेक्ट कौन है, हु ही इज, व्हाट। तो यहाँ आप अंदाजा कर सकते, अगर आप ये क्लूज भी याद रखें, दैट एडवर्ब आंसर्स हाउ एंड वेयर, एंड एडजेक्टिव आंसर्स विच वन, व्हाट टाइप, एंड नाउन आंसर्स व्हाट। तो ये भी समझने में आसानी पैदा कर देता है। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश की कि आपकी समझ में ये चीज़ आ जाए कि जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लास है, या हम उसको मेन क्लास भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लास जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैंने बताया कि सिमिलरिटी ये है कि दोनों में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। डिफरेंस ये है कि इंडिपेंडेंट क्लास में कंप्लीट मीनिंग होती है, इट गिव्स कंप्लीट सेंस, और डिपेंडेंट क्लास में कंप्लीट सेंस नहीं होता है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं और डिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनको हम, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ देम, वन एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास। तो किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं एडवर्ब क्लास कौन है, एडजेक्टिव कौन है, नाउन क्लास कौन है। हम देखेंगे कि सेंटेंस में ये डिपेंडेंट क्लास क्या काम करता है। अगर ये एडवर्ब का काम करता हो देन इट्स एडवर्ब क्लास, अगर ये एडजेक्टिव का काम करता हो देन इट्स एडजेक्टिव क्लास, अगर ये नाउन का काम करता हो देन इट्स ए नाउन क्लास।
तो इस तरह से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि सेंटेंस में ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से हम क्लासेस को आपस में तकसीम कर सकते हैं. हाउ कैन वी डिटरमाइन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस. So that's all about this classes. I hope you might have understood it well. So after reading understanding these two lectures, finite and non-finite verbs, and second clauses, types of clauses, if you have understood these two things better, I think our third lecture that I am now preparing about simple compounded complex sentence, that would be very easy for you to understand. So please watch these two lectures and prepare yourself for understanding that third lecture that I am preparing very soon. Thank you very much.